W1 V1 और इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है XC1 XC1 YC1. Then we have W2 V2 XC2 YC2. That's let me write it in this way. So we have a plane and then its closest point. Yes? लाइट आ रही है. Got it? हाँ वो अभी थोड़ी आगे आ जाएगी. चलो बस ठीक है ठीक है ठीक है. ठीक है इट्स फाइन. Then we have ठीक है. we have several of these. Let's say A, BK, then we have X, CK, Y, CK. We have several planes. For each plane, we have a closest point to it. You have to pick one. Which one will you pick? Remember the one that has maximum margin. And margin is defined by the closest point. Yes? And what we can do is the following. What we can do is the following. W1 transpose X C1 plus V1 times YC1, that is 1. If it is not 1, we can set it to 1 and the W will scale accordingly. Yes? Yes. And let me call it W dash or whatever. If it is not 1, we can scale it to 1. Make sense? And then we have W1 dash. That thing. You know always do that? Yes. We can do this thing with everyone. So we have the numerator 1. Let me write this as I. Where the numerator is always 1. You pick this one, you make the numerator 1 and accordingly W. You pick this one, you make the numerator 1 and accordingly W. Yes? Yes, no? Yes, sir. Now, because we are comparing k fractions with all numerators same, we are comparing k fractions together, and the k fractions have all numerators same. We make it same, and by making same, we have not changed the distance, we have not changed the plane. Yes, no? So the comparison basically is among these. Yes? Yes. We want this number to maximum. We want this number to be maximum. Yes? Yes. And this number will be maximum for the plane for which the W norm is minimum. Make sense? Yes. If 6 is big, 1 for 6 is small. Yes? Yes. If we want 1 over x to be big, make x small. Very small. Yes, no? Yes. So far, so good? Perfect. सही है जी? सही है. Okay. So winner. Winner is the one that has minimum. No. This is the winner. The one having minimum distance. Yes, no. और ये भी याद रखें कि क्लोजेस्ट पॉइंट के लिए न्यूमरेटर 1 स्केल किया हुआ है. वो पॉइंट जो क्लोजेस्ट नहीं होगा उसके लिए न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी. यस? और जब क्लोजेस्ट पॉइंट को 1 स्केल किया तो जरूरी नहीं था कि 1 स्केल करने से पहले उसकी वैल्यू 1 से बड़ी थी. हो सकता है y into w transpose x plus v was initially 0.5 divided by something. तो फिर हमने 2 से स्केल करके उसको 1 करना है. हमने क्लोजेस्ट पॉइंट का न्यूमरेटर 1 करना है. You can always do that. Just to compare the w's together. Yes, no? Make sense? और वो पॉइंट जो उस प्लेन से क्लोजेस्ट नहीं है उनका न्यूमरेटर 1 से ग्रेटर होगा. So far so good? Yes, Yes, no? yes, sir. ये तो क्लोजेस्ट पॉइंट है ना जिसका न्यूमरेटर 1 है.
कोई और पॉइंट होएगा, उसको प्लग इन करेंगे तो न्यूमरेटर 1 से बड़ा आएगा. Yes, no. For the closest point we set it to 1. We scale it with respect to the closest point. First we compute the distance with the closest point, then we scale it so that the numerator becomes 1 and whatever the w scaled out. For every other point, the numerator will be larger. For one plane, for one plane. मैं ये नहीं बता रहा कि हमने ये निकाल ला कैसे, इस पर तुम्हें आएगी. अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई पॉइंट है जो प्लेन से क्लोजेस्ट है, ठीक है, उसका जब मैंने डिस्टेंस कंप्यूट किया तो डिस्टेंस कंप्यूट करने के दो कंपोनेंट्स थे. फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर था, एक डिनोमिनेटर था. न्यूमरेटर की वैल्यू आई 5, डिनोमिनेटर की वैल्यू आई 7. तो मैंने पूरी इक्वेशन को 1/5 से स्केल कर दिया. सही है. और अब क्लोजेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस वही रहा, इक्वेशन भी वही, लेकिन नाउ द न्यूमरेटर बिकम्स 1 एंड द डिनोमिनेटर बिकम्स व्हाटएवर. अब जो वो पॉइंट जो इस प्लेन के क्लोजेस्ट नहीं है, उसके लिए न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. मेक सेंस? यस, नो? ग्रेटर देन 1 होगी, वो मतलब 1.5 हो, 2 हो, 7 हो. अगर वो 1 हो तो वो पॉइंट बी क्लोजेस्ट है, और एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं जो क्लोजेस्ट हैं. Every point that has numerator value 1 is the closest, defining the same margin. Less than 1 नहीं हो सकती. अगर less than 1 होगी तो वो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा. अगर less than 1 होगी, for example start में स्केलिंग करने से पहले स्टार्ट में क्लोजेस्ट पॉइंट था, उसकी न्यूमरेटर वैल्यू है 0.5 और डिनोमिनेटर वैल्यू है 10. तो अब आपने 2 से स्केल कर दिया to make the numerator 1 and the denominator now becomes 2 से स्केल के बाद 20. Yes, no? Yes. So I'm not saying the closest point has always, so value बड़ी थी स्केल करके छोटी है, छोटी थी बड़ी कर. You have to set it to 1. Make sense? Yes, no? Clear? Is that okay? Now listen to me. The min of W तुम्हारा है. क्योंकि वो 1 over है ना. Because we want this thing to be maximum. We want this fraction to become maximum. We want to achieve high margin. Yes? Transpose it. This is not right. Yes, this is for problem. इसके बाद टाइम ये भी सही है. So far so good? Yes. Okay, I'm going to set up the problem. Then we will see how to solve it. Yes, no? ये जो अभी मैंने बात की है इसको मैं एक या दो इक्वेशंस की सूरत में लिखूंगा, और जितनी मैंने बातें की हैं और जो मैं आप लिखूंगा दे आर इक्विवेलेंट. आई एम सीइंग द प्रॉब्लम इन दिस वे एंड सीइंग द प्रॉब्लम जो मैं अभी तरीका लिखूंगा, दे आर जस्ट इक्विवेलेंट. यस? We want to find out a W. We want to find out a W. We want to find out a W with minimum norm. Yes? And the following properties. Yi W transpose Xi plus B is always greater or equal to 1. अब ये ध्यान से देखिएगा. Let's say there are 5 possible planes. Let's say there are 5 possible planes: W1 B1, W2 B2, W3 B3, W4 B4, W5 B5, and we want to choose one of them. Yes? So for the very first plane, W1 B1, we pick its margin. We see its margin. We scale W1 and B1 accordingly so that the numerator becomes 1. ये numerator लिखे हैं. ये numerator लिखे हैं. This is numerator. We fix the numerator for all 5 planes for the closest point to 1, and then see for which plane the W norm is minimum. Make sense? Yes. Yes, no? Yes, sir. Okay. And for the points that are not closest, for those points the numerator value will be larger than 1. Yes, no? Because we do not know the closest points, because we do not have finite number of planes, we have infinitely many planes to search for.
and for every plane there is a closest point to it. Make sense? So the general setting is the following. Come up with a plane that has minimum norm possible, with the condition that the numerator is always greater or equal to 1. Make sense? Yes. Yes, no? Now the numerator will be 1 for the closest point, and the numerator will be larger than 1 for non-closest point. So for this W, there will be some closest point, and for that the numerator will be 1 and the other points will be greater than. For this W, it will be having some closest point. So I'm not providing my closest point. I'm not providing anything. All am I saying? Find out the W such that for all points, this condition holds. For all, because I am not going to supply any W, I am not going to supply any closest point. I have to find this out. लेकिन वो जो भी बेहतरीन W होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? There does not exist another W with maximum margin. Make sense? अब ये प्रॉब्लम सेटअप कैसे करनी है? ये प्रॉब्लम यानी इंट्यूटिवली देखें, ये सेटअप मैंने इस तरह से किया है कि I have several W's and B's to choose from. For every W and B, its closest point का numerator of the distance is set to 1. Now I have several comparisons to do. I will pick the one having minimum W. Yes, no? Make sense? Yes, no? But that's it. That's it. अब हम देखें इसको solve कैसे करना है. This is something we want to solve. Yes. Greater than 1 for the point which is closest to the boundary. This number will be 1. Obviously, for the point that is not closest, this number will be greater than 1. तो हम हमेशा ही कर लेते हैं. नहीं closest point के लिए 1 होगा. Closest point को 1 बनाने के लिए आपने जो scaling करनी है वो करनी है. Closest point के अलावा हर point के लिए scaling भी करनी है. आपने closest point pick करना है. उसके लिहाज से scaling define करनी so that the numerator becomes 1. That's it. उसके बाद कभी scaling नहीं होगी. अब वो points जो closest नहीं हैं, उनके लिए numerator value 1 से बड़ी रहेगी. क्योंकि उनका distance ज़्यादा है. Yes, maybe not. Is that okay? Now the next step is how to solve this. So the problem is the following. I will supply you the training data x1, y1, x2, y2, where y is labeled as 1, minus 1, 1, minus 1, whatever. You have to find out the w with the following property. If you come up with a w with the following property, that w is guaranteed to have maximum margin. There does not exist another w with margin better than this one. तो हम कौन-कौन से w ट्राई करेंगे? रेंज क्या होगी? So let me answer this question by a question. So let's say you are given a function and you are asked to find out for what input the function achieves the minimum output, and the function is continuous. You try everything. क्या हम हमेशा ऐसा करते हैं? Derivative. There are ways to find out, and I'm going to discuss that. Make sense? There are ways to find out. So we are not going to try discrete ways. We are not going to do let's try this w, let's try this w. Again, जैसे हमने minimum find out किया था continuous case में, we take a derivative, put it equal to 0, and without trying everything, we guarantee that there is nothing better than this. We will guarantee here as well. Yes, no? Is that okay? So far, so good. इस equation में मैंने वापस पढ़ा नहीं आना, इसको अच्छी तरह से digest कर लिया, मैं आगे चलता हूँ. Because the next step is how to solve this. I have set up the SVM problem. This is the problem. If you can solve this problem, ये बिल्कुल ऐसे ही है. आपको मैं काफी सारे पॉइंट्स दे दूँगा और आपसे कहूँ कि यार ऐसा W ढूंढ लो जिसमें ये प्रॉपर्टी हो. तो एक तो सवाल ये है कि आप उसको W को ढूंढेंगे कैसे. दूसरा ये है अगर आपको W ढूंढना है जो इसको पूरा करे, then that W has maximum margin. Make sense? अब सवाल ये है कि अच्छा W ढूंढेंगे कैसे. There are so many W's और ना सिर्फ W B भी ढूंढना है, W and B both.
several of these. Yes. जी प्लेन से नहीं किया। सो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बता रहा कि मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा। सो शायद अगर आपको ये सॉल्व अगर हमें बिल्कुल नहीं पता और अभी तक हमें किसी को नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल अगर मैं आपको प्रॉब्लम दूं तो शायद आप फॉलोइंग वे में जाएं, शायद यानी अगर आप सॉल्व करने जाएं शायद आप फॉलोइंग वे में जाएं। You come up with some W, let's try this W and B. And then for all training data points, you compute the margin. And you say, okay, for this W and B, this is the margin. Let's try another W and B. You try another W and B and you compute the margin. Then you try another W and B and you compute the margin. अगर आप इस वे में जाएंगे ये प्रॉब्लम इस तरह से सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है। You try, let's say, अगर आपके पास टोटल वैरायटी है K W and B's की, आपके पास टोटल K planes to try, तो आप इस इतनी थियरी मैथ में जाने की जरूरत ही नहीं है। You try all of them. Once you have a plane, you can compute its margin. Because once you have a plane, you compute the distance of all points to it and see what is the minimum distance. This is the minimum distance, that's the margin. Let's say you are allowed to pick from K planes, and those K planes are given. Which one to pick? You need not to set this problem. You compute the margin of everything and see which has the best margin. The problem in this, putting the problem in this phase, there are infinitely many choices we have to go. Now, you're not going to see, okay, I will start with this plane, then I will try that plane, then I will try that, because there are infinitely many to try. So obviously, we are going to use some very fundamental technique, like we have used in gradient descent, like we have used in. So we have used in linear regression, for example. This particular, we want to find out the minimum, find out the W that gives the minimum of the cost function. And we did not try every W and compute the cost function. Yes. We use some fundamental technique. Okay, number one, this function is complex. Number two, it is differentiable. So okay, so the point where the minima exist must have derivative 0. This is the result that we do. And using that, I mean, we found a point with derivative 0 and we just found that one. We did not try every W one by one and see which one gives me. I set this problem in a way that it will lead me towards a technique that is fundamental and will be able to solve it. Make sense? Yes, no? So we do not have W's, we do not have closest points. And that makes the problem very, very challenging at the first glance. Oh, we have nothing, we have training data. Now we want to find out a plane with maximum margin. And we have nothing to start with. लेकिन वो जो भी मैजिशियन होगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा. This is no different than what I have explained so far. Yes, ma'am. Make sense? उस मैजिशियन को थोड़ी देर बाद लेकिन वो इसको सॉल्व कर रहा होगा. If you can solve this, we are done. How to solve it? We will see. So far, so good? Yes. Sorry? Because we do not know for which plane, we do not know the closest points, we do not know the planes. If you have the plane, we have a closest point. If you have a point, this is the point, find out the plane which is closest to it. If you are given closest point, we can find out the plane. If you are given a plane, we can find out the closest point. The problem is we do not know the planes. So, a plane, find out a plane that has this condition. That all the points enumerators will be having this condition. So, uska jo bhi closest point hoga, for that it will be equal to 1, and for the rest of the points it will be equal to 0. Because we do not know the closest point beforehand. We do not know. Yes, no? Yes. Okay. चले आगे? Yes. एक और छोटी सी चीज वो
बाकी W's के हिसाब से, उस W की नॉर्म स्क्वायर भी मिनिमम होगी बाकी W's की नॉर्म स्क्वायर के लिहाज से। Yes? Yes. Make sense? और इसका सिर्फ फायदा ये है कि ये नॉर्म की वजह से जो स्क्वायर रूट आता है उसको हम ये हम भी करते हैं, जी ये हम ITC के सामने में भी करते हैं। ठीक है, सही है जी। सो वो W जिसकी नॉर्म मिनिमम होगी उसी का नॉर्म स्क्वायर भी मिनिमम होगा। Yes? Yes. Okay. So that's a problem. और अगर आप मुझे allow करें, even if you want, so this thing is, so minimum W transpose W, yes, subject to the constraints yi W transpose xi plus b is greater or equal to 1 for all terms. Yes? सही है जी? No? मैंने ये नॉन स्क्वायर ले लिया। अगर आप नॉन देखें तो ये W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस Wn स्क्वायर रूट, that's a norm. जब मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, this goes away, and this is simply dot product of this to this side. Yes. सही है जी? अच्छा, जो नंबर मिनिमम होगा, अब ये नंबर मिनिमम होना चाहिए, out of several choices, there are several things जो मिनिमम होगा, उसका हाफ बाकी सारे नंबरों के हाफ से मिनिमम होगा। Yes. और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? बाद में कभी मुझे डेरिवेटिव वगैरह लेना पड़ेगा, इधर से 2 नीचे आएगा तो कैंसिल हो गया, and things become clean, that's all, and does not hurt anything. So far so good? Yes. Okay, so I want a W such that W transpose W is minimum. There are several choices, W1, W2, W3, and so on. So the W for which W transpose W is minimum. For the same W, half of W transpose W will be minimum as compared to the other halves. Yes? Yes, no? Erase कर दूँ? Yes. ये ऊपर कर दो। अच्छा, अब तो लॉस लेंगे। We want to minimize this. We want to minimize this thing. But we do not allow these constraints to be violated. Yes. We want for the first point, this number will be greater or equal to 1. If we want the same thing for the second point, we want the same thing for the third point, and so on. This kind of minimization problem is known as constraint minimization problem. Constraint means you want to minimize something, but you have to follow certain restrictions. You're not allowed to freely move and minimize. इससे पहले ये होता था कि अच्छा ये एरर है इसको मिनिमाइज करो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं थी, बस फाइंड आउट करो W that makes the error minimum. अब हो सकता है कि ऐसा W हो जो इस नंबर को तो मिनिमाइज कर रहा हो, लेकिन इसमें से किसी एक पॉइंट के लिए वो कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा हो. You are not allowed that W to come. Make sense? So this is a minimization, and this is a very hard problem. You want to find out the minimum, but you have to follow certain constraints. So हो सकता है आपके पास एक W लेके आओ, यार ये मैं W लाया हूँ, इसके लिए तो नॉर्म सबसे कम है, and the best answer is W is 0. W is all zeros. You cannot do better than that. Zeros transpose zeros. Whatever you want to minimize is to a level that cannot be further minimized. But that W does not follow the constraints. If it follows the constraints, that's the best you are going to do. Make sense? So now the goal is not just to find out the minimum. The goal is to find out the minimum following certain constraints, and this problem is known as constraint minimization problem. अब जो मैं चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो जरा सुन लें। जब मैं बात करता हूँ मिनिमम फैक्टर करें, मैंने ये बात की थी लीनियर रिग्रेशन के केस में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में भी मिनिमम फैक्टर करें, और फौरी तौर पे आपका माइंड क्लिक
क्लिक करना था टेक द डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू 0, टेक द डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू 0। अगर मैं ये कंस्ट्रेंट्स ना देखूं, जस्ट उस फंक्शन को देखूं जिसको मिनिमाइज करना है, दिस फंक्शन इज कॉन्वेक्स, without going into the details why it is convex, how to check the convexity, just believe that this function is convex, that we want to minimize. If the constraint were not there, if these constraints are not there, we want to find out a W that minimizes this, and this is no longer a constraint. Then the obvious way is to differentiate this with respect to W. Put it equal to 0, find out the 0. If it is a closed form, your direct solution. If it is not a closed form, apply gradient descent and find out the. Yes? So the function जिसको आप minimize करने जा रहे हैं, that is convex. आपने minimum भी find out करना है. So फौरी तौर पे आपके ज़हन में जो चीज़ आती है, जो click करती है, that thing is derivative. Make sense? Derivative या gradient descent like approach. Problem with gradient descent is it does not work in constrained situations. So we have to come. I mean, find out the minimum. Okay, progressively update W so that when the W का derivative becomes 0. That works if the optimization problem, if the minimization problem has no constraints in it. So here we really have to look into how we are going to solve this. It's a constraint minimization problem. Make sense? No. In the very first case, in the case of linear regression, closed form solution existed. We used their squared error. In logistic regression, we used cross entropy error, and we saw the closed form solution does not exist, and the gradient descent came to the rescue. The first problem was convex, the second problem was convex. Now the problem is convex, but neither the gradient descent nor the closed form, no such solution exists. So I'm going to introduce a new solution to you, a solver to you, in the case of this one, yes. जिससे हमने linear regression के केस में lambda omega और W ट्रांसपोज W यानी उसकी पोलिनोमियल की डिग्री को करने के लिए स्ट्रिक्ट करने के लिए हमने उसे ऐड कर दिया था बीच में और रेगुलराइजर ऐड किया। क्या आप इस कंस्ट्रेंट को उसमें ऐड कर दें? Yes. So very good insight. यहाँ पे इनका सवाल ये है कि रेगुलराइजर किधर है और एरर किधर है। नॉर्मली ये होता है कि अच्छा W को मिनिमम करें, नॉर्मली ये टर्म इज रेगुलराइजर, तो एरर टर्म किधर है? व्यवस्था में आ रही है? एरर टर्म किधर है? ये तो रेगुलराइजर नहीं होता, हमने तो कहीं रेगुलराइजर है। और जब रेगुलराइजर और एरर टर्म आते हैं तब लैम्डा की आती है ना कि अच्छा इसकी और इसके दरमियान ट्रेड ऑफ करना है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसको। When you have in sample error and you have model complexity, then you include lambda there ना। अच्छा इन sample error को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये model complexity and stuff like that। यहाँ पे ये जो टर्म है जिसको मिनिमाइज करना है, which naturally arises कि SVM is going to solve this, which naturally regularizes everything। लेकिन दूसरा सवाल ये कि in sample error किधर है? Regularize तो हम कर रहे हैं, what is the in sample error? जरा गौर से देखें, हमने स्टार्ट में assume किया था the data is linearly separated, which means the in sample error is exactly 0. So if you're happy, I just write this. ये constraint ensure कर रही है you are not allowed to make errors. ये constraint क्या कह रही है? If yi is negative, inside number should be negative. If this is positive, then this must be positive. Which means if you want to satisfy the constraints, you're not allowed to make a single error. So the error is 0. I will relax this condition in the case of outliers and in the case of non-separability. So अभी हो ये रहा है, अभी जो problem naturally arise होती है वो self-regularized है। अच्छा। इसी को minimize करना था regularization के केस में। अगर यहाँ पे कोई positive error होता तो यहाँ पे लैम्डा लगाते हैं। अच्छा इसके और इसके दरमियान ट्रेड ऑफ कितना रखना है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? मेक सेंस? यस नो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई तो उस कंस्ट्रेंट को हम
हमने नॉन कंस्ट्रेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अभी भी हम कंस्ट्रेंट को नॉन कंस्ट्रेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद जब वो उसको ऐड कर दिया था तो कंस्ट्रेंट वाज नॉट सर ये यहाँ तक तो समझ आ गई है कि इसमें कॉन्स्टेंट है जिसकी वजह से वो हमारा कॉन्वेक्स वाला सोल्यूशन था उसको नहीं लग सकता, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स है भी सही लेकिन हम इसको फिर भी चेक नहीं कर सकते उस तरीके से। लेकिन क्यों नहीं कर सकते ये सेंस नहीं बन रही। आपने तो अपनी यकीन कर लिया लेकिन क्यों ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टेंट्स के केस में हमारा डेरिवेटिव टेस्ट उस पर पास क्यों नहीं हो सकता, वो उसकी मतलब उसकी हेल्प भी करने जब आप डेरिवेटिव लेते हैं और इक्वल टू 0 एंड यू फाइंड आउट द पॉइंट्स जो कि सैडल पॉइंट्स हैं, तो डेरिवेटिव लेने के दौरान कहीं पे कोई कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा नहीं कर रहे होते। और अगर आप ये देखें कि अच्छा मैंने कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है, देन दिस इज नो लॉन्गर वेरी क्लोज फॉर्म प्रॉब्लम। अच्छा जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है हो सकता है डेरिवेटिव जहाँ पे 0 ना हो वो बेस्ट सोल्यूशन है, वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर ये कॉन्वेक्स है तो फिर तो इसका मिनिमम ही होना चाहिए। कन्वेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, कन्वेक्स प्रॉब्लम की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कन्वेक्स के अंदर अगर मिनिमा ज़्यादा हो तो ये आपको ग्लोबल देता है, तो ये बात करना चाह रहे हैं आप? तो मैं इसको थोड़ा सा उसको कर देता हूँ। ओके, ये एक सवाल है कि मैं इस पर थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी और एब्स्ट्रैक्ट लेवल की डिस्कशन कर देता हूँ 5 मिनट में, उसके बाद हम आगे चलेंगे इसको करना। सवाल उनका ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो इसका कोई एक मिनिमम एग्जिस्ट करता है और इजीली अचीवेबल है तो डेरिवेटिव शुड है। अब तक मैंने आपको जो बताया है वो ये है कि अगर इफ यू कैन टेस्टिफाई दैट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स देन डिफरेंशिएट इट, पुट इट इक्वल टू 0 to your done. Let me unfold this into a little bit details. There are थोड़ी सी कन्वेक्स एनालिसिस की बात करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ब्रीफ और बिल्कुल इंट्यूटिव सेंस में विदाउट डिटेल्स। कन्वेक्स एनालिसिस और कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन इज अ फुल ब्रांच, और मेरे ख्याल में किसी ने अगर मशीन लर्निंग में एक्सेल करना है आगे निकलना है बहुत, तो द फंडामेंटल कोर्स और फंडामेंटल पीरियड इज कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। ये इतना ज़रूरी कोर्स है। अगर आप यानी इस कोर्स के बाद कहेंगे हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए टू पॉलिश आवर मैथमेटिकल स्किल्स एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, I will say without a doubt convex optimizations. And the reason is the following. Identifying a particular error function to be convex, whether it is convex or not, that's a skill. There are checks, but in high dimension stuff like that, it becomes not very easy to see whether a particular error function is convex or not. If it is not convex, there are ways to make it convex without violating the conditions जिसमें वो प्रॉब्लम सेटअप की गई थी। सो देयर आर ट्रांसफॉर्मेशंस जो इनिशियली नॉन कन्वेक्स प्रॉब्लम्स को कन्वेक्स प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकती हैं, नॉट फॉर एवरी प्रॉब्लम, फॉर सम प्रॉब्लम्स वी कैन डू इट एंड देयर शुड बी अ स्किल टू डू दैट। देयर आर कन्वेक्स प्रॉब्लम्स दैट आर नॉट कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, like we have seen in logistic regression, like we have seen in linear regression. And they are not constraint optimization as well as they are differentiable. So the function that you want to minimize is differentiable function. There are functions that are not differentiable. So there are many convex problems for which the error function is no longer differentiable. Us case mein derivative makes no sense. So there are full, body of techniques that solve those kind of problems. But that won't be a convex function. That is a convex function. So convexity does not depend upon differentiability. Make sense? So convexity has a larger definition. It's a definition. Or you can introduce certain functions that are non-differentiable but still convex, and there are ways to solve that. Having said that, so there are several ways to. This is not simple. Okay, because this function is convex, okay, apply gradient descent. No. First check if it is convex, it is not a constraint optimization problem, the problem is no longer constraint optimization problem. Third, it is differentiable. Then you can apply a gradient descent. And out of the jungle of the problems, very few problems fall in this category. Makes sense? And there are problems that are not convex,
some problems that are not convex, and they are solved using a dual space called Lagrangian, and in that space they have certain strong dualities. They are not convex, still their minimum is achievable through certain techniques, but not every problem falls under that category. So this convex analysis is a complete, is a set of techniques you have to go through. I mean, seeing a problem and knowing that it is convex is not is a big thing. It is convex, yes. It is not convex, it is convex. In that category, you decided it is convex. That's a big achievement, but not all. You have to move on, and there are techniques to move on. And for this particular problem, gradient descent will not work because of the constraints are there. Make sense? If the constraints are not there and the problem is convex and not differentiable, gradient descent will not work. So there are ways to solve different problems. And I'm going to introduce one way to solve this problem. And that is one way. There are other problems, other techniques, other shapes of the problems, several shapes. For this shape, try this solver. For this shape, this solver is recommended. For this one, and people in machine learning and several, they want to represent their problem in one of those famous shapes, then they apply those solvers to go. Make sense? Yes or no? Yes. Okay, great. So let's have a 5 minutes break. Why not? Okay,